नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बजने वाले हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चुरू में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी की हो सकती है घोषणा। किसानों, मजदूरों और महिला सशक्तिकरण पर रह सकता है फोकस। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की छंटनी। 8 अप्रैल तक नाम लिए जा सकेंगे वापस। चौदह विपक्षी दलों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में सत्ता पक्ष द्वारा राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का लगाया गया है आरोप। आरबीआई गवर्नर अब से कुछ देर बाद चालू वित्त वर्ष में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की करेंगे घोषणा। 3 दिन तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुआ मंथन। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। कल खेले गए रोमांचक मैच में पंजाब ने गुजरात को 1 गेंद शेष रहते दी 3 विकेट से शिकस्त। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के तमाम स्टार प्रचारक दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री चुरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज हरिद्वार में एक चुनावी जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। नड्डा के इस चुनावी दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। और लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। घोषणा पत्र में पार्टी 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ कई वादे करने की तैयारी कर रही है। घोषणा पत्र के वादों को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए पार्टी बुधवार को ही घर घर अभियान शुरू कर चुकी है। अपने इस अभियान के अंतर्गत पार्टी ने 8 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। और कांग्रेस ने गुजरात की 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मध्य गुजरात में आने वाली वडोदरा सीट से जशपाल पढ़ियार, सुरेंद्र नगर से ऋत्विक भाई मकवाड़ा और जूनागढ़ सीट से हीरा भाई जोटवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि जशपाल पढ़ियार पूर्व में वडोदरा और सुरेंद्र नगर से ऋत्विक भाई मकवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी और नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल समाप्त हो गई थी। इस चरण में 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम की 5 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 3 सीट और कर्नाटक की 14 सीट शामिल है। वहीं जम्मू और कश्मीर की भी सीट इसमें शामिल है। साथ ही केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 7, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1,
तो जम्मू और कश्मीर की हम बात कर रहे थे और इसके अलावा केरल की 20 सीट, महाराष्ट्र की 8 और मध्य प्रदेश की 7 सीटें इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो इसमें 13, त्रिपुरा की 1 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें इसमें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 सीटें इसमें शामिल हैं और तो और आइए सीधे चलते हैं मुंबई, जहां इस आपको बता दें कि और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पूरी बैठक और उसके बाद अब एक अहम निर्णय यहाँ पर सामने आएगा। साफ तौर पर अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण होने वाला है और ऐसे में आपसे बस कुछ ही देर में उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि मौद्रिक नीति को लेकर देखिए शक्तिकांत दास कह रहे हैं। While doing so, the Reserve Bank has discharged its responsibility with integrity and professionalism. Compared to many other central banks, the Reserve Bank has a much broader range of functions which is vital for ensuring macro-financial stability of a modern and complex economy like India. There are functional complementarities among the various responsibilities of the Reserve Bank of India. Being a full-service central bank, the Reserve Bank is well positioned to take a holistic view of various critical issues confronting the economy and the financial sector, and it's also well positioned to take appropriate steps in the best interest of the economy. We continuously strive to learn, adapt, and innovate while performing our multiple responsibilities. I would now like to focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, which met on 3rd, 4th and today, 5th of April. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate, remains at MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February, and this has come down to 5.1% in these 2 months from the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%.
As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. Under these circumstances, monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of the past monetary policy actions. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC will remain resolute in its commitment to aligning inflation to the target. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I will begin with the scenario relating to global growth. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high frequency indicators. Now in my statement, whatever I am saying, it is backed up with lot of data which are there in the footnotes. So those of you who are interested could refer to this statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after this statement is over. So lot of data backing up whatever I am saying is available in the various footnotes of my statement. You may like to refer to it. Let me start again on the global growth part. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high frequency indicators. Global trade is expected to grow faster in 2024, although weaker than its historical average. Inflation is moving closer to targets, but the last mile of disinflation is turning out to be challenging. Services inflation in advanced economies remains sticky amidst tight labor markets. Accordingly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. The overall outlook is challenged by continuing geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and high public debt burden. In the last monetary policy statement, if you recall, I had expressed concerns about the high levels of public debt in both advanced and emerging market economies, that is the EMEs. These are dormant risks which could erupt abruptly. Debt to GDP ratio, which rose during the pandemic, remain elevated and are projected to increase further with rising interest burden and cost of borrowing, thus raising debt sustainability concerns. Worsening debt situation in advanced economies, in particular, can generate spillovers for the emerging market economies in the form of swings in capital flows and volatility in financial markets. The emerging market economies with rising levels of public debt in particular would be vulnerable to these spillover effects. Credible fiscal consolidation plans, particularly in major advanced economies, focusing on growth enhancing investment would be necessary to address this challenge, not only for themselves, but also I think for the overall global economy. India, however, presents a different picture on account of its fiscal consolidation and faster GDP growth. Turning to domestic growth, the domestic economic activity continues to expand at an accelerated pace, supported by fixed investment and improving global environment. The second advance estimates placed the real GDP growth at 7.6% for 2023-24, the third successive year of 7% or higher growth. From the supply side, industrial activity led by manufacturing continued its momentum. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, displayed a sustained expansion in both February and March, touching a 16-year high in the month of March. Services sector exhibited broad-based buoyancy with all sectors
within the services sector registering strong growth. The PMI services remained above 60 during February and March, suggesting sustained healthy expansion. With rural demand catching up, consumption is expected to support economic growth in 2024-25. Urban consumption stayed buoyant, as evident from various indicators. Details are given in the footnote. The resilience in cement production, together with strong growth in steel consumption and production and import of capital goods, augur well for the investment cycle to gain further traction. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 31.2 lakh crore. I repeat, at rupees 31.2 lakh crore during 2023-24 is significantly higher than that of the previous year, which was 26.4 lakh crore. External demand improved in February, with exports registering double-digit expansion. Trade deficit, however, widened in February as imports also accelerated. Going forward, the outlook for agriculture and rural activity appears bright, with good Rabi wheat crop and improved prospects of Kharif crops due to expected normal southwest monsoon. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. Let me read this sentence again because there are quite a few points in this. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. As per our survey, consumer confidence 1 year ahead reached a new high. The prospects of investment activity remained bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based. Persisting let me just rephrase it. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, and rising capacity utilization, and finally strengthening business optimism as reflected in our surveys. I think the sentence is a bit long. It's better that I read it out again for greater clarity. And sorry about that, but I think it provides greater clarity. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, rising capacity utilization, especially in the manufacturing sector, and strengthening business optimism as reflected in our surveys. Improving global growth and trade prospects, coupled with our rising integration in global supply chains, are expected to propel external demand for goods and services. The headwinds from protracted geopolitical tensions and increasing disruptions in trade routes, however, pose risks to the overall outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. Turning to inflation, food price uncertainties continue to weigh on the inflation trajectory going forward. A record Rabi wheat production would help temper price pressures and replenish the buffer stocks. As you would recall, the buffer stocks had slightly dipped, but I think the record Rabi production of wheat is expected to replenish whatever depletion had taken place.
Moreover, early indication of a normal monsoon augurs well for the Kharif season. International food prices also remain benign. The tight demand-supply situation in certain categories of pulses and the production outcomes of key vegetables warrant close monitoring, especially in the background of the forecast of above normal temperatures in the coming months. And these above normal temperatures, as per the current forecast, are expected to prevail in April, May and June, and not beyond June. That is the current forecast. Frequent and overlapping adverse climate shocks pose upside risks to the outlook on international and domestic food prices. Cost push pressures faced by firms are seeing an upward bias after a period of sustained moderation. Deflation in fuel is likely to deepen in the near term, following the cut in LPG prices in the month of March. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. Continuing geopolitical tensions also pose upside risk to commodity prices and supply chains. Assuming a normal monsoon next year, CPI inflation when I say normal monsoon for next year, I mean the current year 24-25. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have explained the growth situation, I have explained the inflation scenario. Synthesizing everything, what does it mean? What implications it has for monetary policy? And that is precisely what I would like to explain now. Inflation has come down significantly but remains above the 4% target. Food inflation continues to exhibit considerable volatility, which is impeding the ongoing disinflation process. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. Our ongoing effort is to ensure fuller transmission of policy actions and anchoring of household inflation expectations. The strong growth momentum, together with our GDP projections for 24-25, give us the policy space to unwaveringly focus on price stability. Now, 2 years ago, around this time, when CPI inflation had peaked at 7.8% in April 2022, the elephant in the room was inflation. The elephant has now gone out for a walk and appears to be returning to the forest. We would like the elephant to return to the forest and remain there on a durable basis. In other words, it is essential in the best interest of the economy that CPI inflation continues to moderate and aligns to the target on a durable basis. Till this is achieved, our task remains unfinished. The success in the disinflation process so far should not distract us from vulnerability of the inflation trajectory to the frequent incidence of supply-side shocks. Our effort is to ensure price stability on an enduring basis, paving the way for sustained period of high growth. I would now like to turn to the aspect of liquidity and financial market conditions. In the February monetary policy statement, if you recall, I had mentioned that liquidity conditions were driven by exogenous factors which were likely to correct in the foreseeable future. Liquidity conditions eased during February and March in the wake of increased government spending, Reserve Bank's market operations, and the return leg of US dollar and Indian rupee sale by swap auction, which had been done
earlier in 2022. In particular, liquidity situation improved in March with system liquidity turning intermittently surplus in the first half of the month. In these circumstances, the Reserve Bank conducted 14 fine-tuning variable rate repo operations, that is VRRR operations, during February and early March to absorb intermittent surplus liquidity. Anticipating the seasonal tightening of liquidity at end March, the Reserve Bank injected liquidity through variable rate, that is VRR operations, both main and fine-tuning operations. Consequently, the average borrowings under the MSF window moderated. Liquidity conditions have, however, again turned surplus from March 30th, necessitating VRR auctions from 2nd of April. So you would have noticed in the last 2-3 days, we have been conducting more than one VRRR auctions. On 2nd April, then again we did it on 3rd April. So last 2-3 days we have been doing it. And today, as you know, there is a variable rate, there is a what you call, as per our cycle, we are doing VRR operation for 14 days. A VRRR operation for 14 days. Now, reflecting these liquidity developments, the weighted average call rate, that is WACR, exhibited a softening bias and has hovered near the repo rate since the last policy meeting. In tandem, rates in the collateralized segment of the call money market have also softened. Financial conditions remained conducive as reflected in reduced term spread in the GSEC market and stable risk premium in the bond market. In the credit market, monetary transmission continues to be work in progress. Looking ahead, the Reserve Bank will remain nimble and flexible in its liquidity management through both main and fine-tuning operations in both repo and reverse repo. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner that preserves financial stability. The Indian rupee has remained largely range-bound as compared to both its emerging market peers and a few advanced economies during the financial year 2023-24, that is till 31st March last. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. This is very important. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. As compared to previous 3 years, the Indian rupee exhibited lowest volatility in 2023-24. The relative stability of the Indian rupee, which I just mentioned, it reflects, I would emphasize, the relative stability of the Indian rupee reflects India's sound macroeconomic fundamentals, financial stability, and improvements in our external position. Turning to financial stability, let me say that latest data as at end December 2023 show that the key indicators of capital and asset quality of scheduled commercial banks continued to be healthy. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. Let me emphasize here that banks, NBFCs and other financial entities must continue to give highest priority to quality of governance and adherence to regulatory guidelines. Financial sector players, by and large, operate with public money, be it of depositors in banks and select NBFCs or investors in bonds and other financial instruments. They should always be mindful of this aspect. The Reserve Bank will continue to constructively engage with financial entities in this regard. It needs to be recognized that financial stability is a joint responsibility of all stakeholders. The Reserve Bank has also been engaging with the regulated entities and various stakeholders for simplifying its regulations and reducing compliance burden. As part of this endeavor,
the recommendations of the Regulations Review Authority RRA 2.0 constituted by the Reserve Bank have been largely implemented. The RRA 2.0 has set a new benchmark for meaningful engagement between the regulator and the regulated entities. Moving further in the same direction, internal review groups within RBI were formed in 2023 to rationalize, simplify and remove obsolete regulations and streamline the reporting mechanism. In pursuance of the recommendations of the RRA 2.0, that is the Regulations Review Authority which was constituted by the RBI. So in pursuance of the recommendations of the RRA 2.0 and the internal review groups which we constituted in 2023, more than 1,000 circulars have been withdrawn. A master direction for rationalizing and harmonizing supervisory returns has also been issued. The Reserve Bank will continue to follow a consultative approach and undertake review of regulations in line with the evolving financial landscape. Turning to external sector, during the first 3 quarters of 23-24, India's current account deficit narrowed significantly on account of a moderation in merchandise trade deficit, coupled with robust growth in services exports and strong remittances. India's merchandise and services exports have grown at a healthy pace in the fourth quarter of 23-24. India continues to be the largest recipient of remittances in the world. The cost of receiving remittances is gradually coming down. Overall, the current account deficit for 2024-25 is expected to remain at a level that is both viable and eminently manageable. On the external financing side, India's foreign portfolio investment, that is FPI flows, saw a significant turnaround in 23-24. Net FPI inflows stood at $41.6 billion during 23-24, as against net outflows in the preceding 2 years, which were in the order of 14.1 billion outflow in 21-22 and 4.8 billion outflow in 22-23. This is the second highest level of FPI inflow after 23-24. Net foreign direct investment moderated to $14.2 billion in April-January 23-24 from 25 billion a year ago. External commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposits recorded higher net inflows compared to the previous year. The amount of ECB agreements also grew markedly in 2023-24 up to February 24. Now all this data is given, details are given in the footnote. India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29th this year, March 29, 2024. I repeat, India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29, 2024. Latest data on various external vulnerability indicators suggest improved resilience of India's external sector. We remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. Now, talking about the forex reserves, I recall that in 2021 our forex reserves had also reached 642 plus billion $. Then following the commencement of the war in Ukraine and the outflow of dollar from India as well as from several other countries on safe haven demand, there were concerns that forex reserves of India was going down, and at one point it had gone down. Our forex reserves had gone down to about $524 billion. And at that time, I think several questions were raised about, what was RBI doing, whether RBI was on the right track. If you recall, at that time, we had very clearly assured that the decline in forex reserves was partly due to, the change in valuations of our assets,
and also partly due to our intervention in the market to ensure an orderly depreciation of the rupee, which is a part of our policy, ensuring orderly depreciation or orderly appreciation. And we had that time very clearly and firmly stated that we are using our forex reserves in a very judicious manner. It was a strong umbrella which we had built up, and we are using it because it was raining heavily. And we were mindful of what we were doing. We knew what is our purpose and in which direction we are moving. And as you would see, now the reserves have again risen, and they stand at an all-time high of 642.6 billion US dollar, 645.6 billion as of 29th March. So, this is one area on which the Reserve Bank remains committed. Number one, to sort of ensure that, the exchange rate of the rupee is market determined. There are inflows and outflows of dollars happening, but it is our focus, it is our prime focus to build up a strong umbrella, a strong buffer in the form of a substantial quantum of forex reserves, which will help us when the cycle turns or when it rains heavily. So let me move forward. Sorry for that digression, but I thought it was necessary to set the record straight. I shall now announce certain additional measures. The first announcement relates to trading of sovereign green bonds in the International Financial Services Center, IFSC. With a view to facilitating wider non-resident participation in sovereign green bonds, a scheme for investment and trading in these bonds in the IFSC will be notified very shortly. The second announcement relates to the RBI Retail Direct Scheme and introduction of a mobile app to operate in the RBI Retail Direct Scheme. The Reserve Bank Retail Direct Scheme was launched in November 2021 for enabling the retail investors to participate in the GSEC market, both in the primary as well as in the secondary market auctions and operations. It is now proposed to launch a mobile app for accessing the Retail Direct portal. This will be of great convenience to retail investors and deepen the GSEC market further. The next announcement relates to review of liquidity coverage ratio, that is LCR framework. Technological developments have enabled bank customers to instantly withdraw or transfer money from their bank accounts. While improving customer convenience, this has also created challenges for banks to deal with potential situations when, due to certain factors, a large number of depositors decide to instantly and simultaneously withdraw their money from the banks. The developments in certain advanced jurisdictions during the last year demonstrated the difficulties it can create for banks. The difficulties it can create for banks to deal with such situations when there is heavy outflow of, heavy outflow or transfer of deposits. And this happens only if that particular bank is in an acute stress. It's not a normal thing which happens, but then the banks will have to remain prepared for all eventualities. A need has therefore arisen to undertake a comprehensive review of the LCR framework for banks. A draft circular will be issued shortly for stakeholder consultation. Our approach is to have a balanced approach, and as I said a little while ago, we follow consultative approach, so therefore the draft circular will enable the stakeholders and the banks to give their views and opinions and suggestions, which will be taken into consideration by the Reserve Bank before arriving at a final decision. The next announcement relates to dealing in rupee interest rate derivative products for small finance banks. At present, small finance banks are permitted to use only interest rate futures for proprietary hedging. It has now been decided to allow small finance banks to use permissible rupee interest derivative products. This will allow further flexibility to small finance banks for hedging their interest rate risk and enhancing their resilience. The next announcement relates to enabling UPI for cash deposit facility. Deposit of cash through cash deposit machines, that is CDMs,
is primarily being done through the use of debit cards. Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines, using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. And the next announcement relates to, I have two more announcements and I shall be quick. Next announcement relates to UPI access for prepaid instruments through third-party apps. At present, UPI payments from prepaid payment instruments, that is PPIs, can be made only by using the web or mobile app provided by the PPI issuer itself. तो आरबीआई गवर्नर को आप यहां पर सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही है और उनसे जुड़ी हुई जो तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता दें, क्योंकि यहां पर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसका अनुमान भी पहले से लगाया जा रहा था कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ऐसे में आपको बता दें. And the final announcement relates to distribution of central bank digital currency, that is CBDC, the e-rupee, through non-bank payment system operators. The CBDC pilots are currently in operation with increasing number of use cases and participating banks. It is proposed to make CBDC retail accessible to a broader segment of users by enabling non-bank payment system operators to offer CBDC wallets. This will facilitate testing of resiliency of the CBDC platform to handle multi-channel transactions. Let me now conclude, and I would like to state that as we progress towards RBI at 100, the upcoming decade is going to be a transformational journey. The Reserve Bank will continue to focus on preserving financial stability and promoting a system that is robust, resilient, and future ready. And it will be robust, resilient, and future ready to support economic growth. Price stability will be a key component of this endeavor. Turning to the present, inflation is on a declining trajectory and GDP growth is buoyant. At this juncture, we should not lower our guard but continue to work towards ensuring that inflation aligns durably and sustainably to the target. Our goal is in sight and we must remain vigilant. We are inspired by the profound words of Mahatma Gandhi, and I quote, "One must persevere and have patience. Success is the inevitable result of such effort." Thank you. Namaskar. तो सुना आपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास यहां पर जो उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की हैं और ऐसे में मौद्रिक नीति को लेकर जो तमाम यहां पर जो बातें थीं और उसके बाद जो तमाम बिंदु यहां पर उन्होंने रखे हैं उनसे एक बार फिर से हम आपको रूबरू करा दें, आपको बता दें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं। उसमें सबसे जो जरूरी बात निकल कर आई है वो रेपो रेट को लेकर निकल कर सामने आई है, क्योंकि जैसा कि पहले भी माना जा रहा था कि यह स्थिर रह सकता है और वही हुआ, 6.5 पर यह स्थिर पाया गया। उसके बाद महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को बढ़ावा देगा, यह साफ तौर पर कहना है आरबीआई गवर्नर का। और इसके अलावा भी जो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोर महंगाई दर 9 महीनों से कमी इसमें देखी जा रही है और 6 महीनों से फ्यूल इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उसको लेकर उन्होंने यहां पर बात कही और फरवरी में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पर दबाव दर्ज किया गया और आरबीआई की इस पर नजर लगातार बनी हुई है, इसको लेकर भी आगे अपडेट आ सकती है। उसके अलावा आरबीआई 4% के रिटेल महंगाई दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता रहेगा, यह कहना है गवर्नर का। और अजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय मिश्रा का रुख करते हैं। अजय जी, जैसा कि हम देख भी रहे थे और यह माना भी जा रहा था, उम्मीद भी यही लगाई जा रही थी कि जो रेपो रेट है वो 6.5 पर स्थिर रह सकता है। ऐसे में ये जो स्थिरता है वो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि जो तेज गति से आगे बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसमें गति देने का काम करेगा और यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो साफ तौर पर यह आने वाले समय में एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बिल्कुल गौरव, आप देखिए कि आज दोहरी खुशी की खबर जो आरबीआई ने पूरे साल के लिए विकास दर और महंगाई के मोर्चे पर जो ऐलान किया है,
स्पष्ट तौर पर एक तरफ तो कह रहा है कि वो महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। अगर मानसून की स्थिति बेहतर रही पूरे साल भर तो 4.5% की महंगाई दर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगाई हर आम खास को प्रभावित करती है और अगर वो कंट्रोल में रहती है तो आपका और हमारे घर का जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है। तो सबसे बड़ी खबर, राहत की खबर यही है कि पूरे साल आपको महंगाई के मोर्चे पर कोई बड़े शॉक्स दिखाई नहीं देंगे। फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में है। थोड़ी सी मुश्किल फरवरी के महीने में दिखाई दी है खाद्य पदार्थों के कीमतों में, और उसको लेकर के आरबीआई ने कहा है कि लगातार निगाह बना रहेगी। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने पूरे साल के लिए विकास दर को सपोर्ट करने की बात कही और ये कहा कि 7% की विकास दर इस साल के लिए भी बनी रहेगी, वो एक बड़ी बात है। क्योंकि अगले साल, मतलब इस साल के लिए 2024-25 के लिए, जो अभी 1 ही अप्रैल को शुरू हुआ है, बहुत सारी एजेंसी जो है वो अनुमान लगा रही है 6.6, 6.5, 6.8%, 7% अभी तक किसी ने नहीं कहा है। लेकिन आरबीआई का 7% का विकास दर का जो अनुमान है, जो आज ऐलान किया गया है, वो बहुत ही अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के लिए। वित्तीय अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता के लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है कि सरकार और आरबीआई दोनों एक साथ मिलकर के महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं और साथ ही साथ लंबी अवधि में ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम दे रहे हैं। तो ये दो सबसे बड़ी खुशखबरी मेरे लिहाज से आज के आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट से हमें मिली है। बिल्कुल अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। श्यामा का भी रुख कर लेते हैं और श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, आपसे यही समझना चाहते हैं क्योंकि साफ तौर पर इन्फ्लेशन को जो लेकर बात कही है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो अप एंड डाउन देखने को मिले, और ऐसे में आज की जो बात अभी तक आरबीआई गवर्नर ने कही है उसको इन्फ्लेशन के अगर मद्देनजर देखें तो क्या लगता है कि किस तरह के संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए, संकेत तो हम लगातार देख रहे हैं कि कई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट से गवर्नर कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन मॉडरेशन में आ रहा है, लेकिन हर बार यही एक बात है कि जैसे ये मॉडरेशन में आता है, ये जरूरी है कि हम अभी भी अपनी निगाहें बनाए रखें इसके ऊपर में, कोई भी लापरवाही यहाँ पर ना हो, और वही भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर कर रहा है। कड़ी नजर बनाए रखे हुए है कि किस तरीके से महंगाई चल रही है, महंगाई का पैटर्न किस तरीके से है। और साथ ही गवर्नर ने इस बार ये भी बताया है कि मॉनसून को लेके या सोइंग को लेके, अभी फिलहाल जो बुआई होगी उसको लेके किस तरीके से आने वाले समय में महंगाई टर्न आउट करेगी, पैन आउट करेगी। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात कर लीजिए या दूसरे पेट्रोल की या दूसरों भारतीय लॉजिस्टिक्स की बात कर लीजिए, जो फ्यूल की बात कर लीजिए, उसके वजह से भी काफी असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि भले ही मॉडरेशन में आ रहा हो महंगाई, लेकिन फिलहाल जरूरत ये है कि आप एक नजर निगाहें उसके ऊपर बनाए रखें। साथ ही जिस तरीके से हम एस्टिमेट्स की बात कर रहे थे, हमने पहले भी बात की थी कि जीडीपी के जो नंबर्स आए हुए हैं, ग्रोथ नंबर्स आए हुए हैं, वो एस्टिमेट से काफी अच्छे आए हुए हैं। और इसीलिए एक्सपेक्टेड था कि जो पिछली बार की एक एस्टिमेशन थी उसे रिवाइज कर दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे बताया गया है इस बार की 2024-25 का जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष का जो बढ़ोतरी होगी जीडीपी की, वो 7% होगी। और साथ ही उन्होंने सीपीआई इन्फ्लेशन की भी बात की, क्योंकि इन्फ्लेशन जरूर हम कह सकते हैं कि मॉडरेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि सीपीआई जो है वो सरदर्द बना हुआ है, इसी की वजह से पूरा महंगाई का जो जाल है वो 4% या उससे नीचे लाने का एक एम भारतीय रिजर्व बैंक का जरूर रहेगा। इसके साथ हमने जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से मापदंड की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू की बात करें, उसके ऊपर भी गवर्नर ने कहा कि फिलहाल हम देखें तो कई सारी जो ऐसी चीजें हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन भारत एक बहुत अच्छे स्पॉट पर है, एक ब्राइट स्पॉट पर है। और साथ ही फॉरेक्स रिजर्व्स की भी उन्होंने बात की। फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो एक रिकॉर्ड कह सकते हैं अमाउंट में आया हुआ है, 645 बिलियन आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर श्यामा ये नजर आया, और इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप ही का रुख करूंगा। अजय जी, हम देख रहे हैं कि जैसे उच्चतम स्तर पर ले जाने की बात जो की गई है, और साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 16 महीने के हम देख रहे हैं कि उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में सर्विस सेक्टर में भी इसमें अच्छी प्रगति यहां पर देखने को मिली है। साफ तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी गति हम लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में देखने को मिली है, आने वाले समय में भी ये अच्छे पॉइंट्स गिना रहा है?
बिल्कुल, जिस बात का जिक्र श्यामा कर रही थी कि हमारा फॉरेक्स जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एफपीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा है पिछले 2 सालों के मुकाबले में, जहां पर एफपीआई का आउटफ्लो देखा गया था, इन्वेस्टमेंट एफपीआई का इनफ्लो हुआ है 46 बिलियन डॉलर्स का। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मजबूती देखी जा रही है गौरव, उसकी वजह से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है और यही इन्वेस्टमेंट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड में और सर्विसेज की डिमांड में। हमने देखा 16 मंथ्स हाई मैन्युफैक्चरिंग की पीएमआई रही, 13 मंथ्स हाई, 14 मंथ्स हाई आपकी सर्विसेज पीएमआई जो आज ही रिलीज हुए हैं मार्च के महीने में 61 से ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी जो सर्विसेज की मांग है पूरी दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की मांग है पूरी दुनिया में, वो एक्सपैंड हो रही है। 50 दिखाता है कि 50 से ऊपर का मामला दिखाता है कि एक्सपेंशन का है, 50 से नीचे दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 50 से ऊपर आप सोचिए 61 का आंकड़ा, और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स के भी अगर आप आंकड़े देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन नजर आते हैं, जो कि गुड्स में जो इंपोर्ट है उसको काउंटर करते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो देश में निवेश की स्थिति है, और ये केवल वित्तीय स्थिरता और वित्तीय अनुशासन की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और यही वजह है कि उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे दिखाई दे रहा है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि मानसून अगर सामान्य रहता है तो आने वाले दिनों में जो रूरल डिमांड है वो बढ़ेगी, असंगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर होने की उम्मीद है, वित्तीय स्थिरता लगातार बनी रहेगी, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के जो निवेशक हैं वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आपको ग्रोथ के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका भी और श्यामा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इलाके में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिला है। इस प्रणाली की मदद से जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत करना आसान हो जाएगा। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। ये एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है जो दुश्मनों के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करता है। और आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संजय से कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे वहां का रुख करते हैं। केजरीवाल का नाम उससे जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उससे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगुंटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगुंटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और
के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है, 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? एक आदमी जिसको खुद ईडी कह रही है ये शराब का घोटालेबाज है, शराब का घोटालेबाज है, उसका क्या रिश्ता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? और इतना ही नहीं, आज की तारीख में वो टीडीपी से चुनाव लड़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखाइए। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे और जेल से निकलने के बाद वो यहां पर अपना बयान जारी कर रहे थे और जो तमाम मन में बातें हैं वो यहां पर रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। असम में 21 किलोग्राम का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। असम एसटीएफ और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान में इसे जब्त किया गया। साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कल असम के कछार जिले में 210 करोड़ रुपए मूल्य का नशीले पदार्थ जब्त किए गए थे। सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग मामले में विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और जमानत की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने की अपील की थी। और अयोध्या में चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। राम भक्तों के आगमन को देखते हुए प्रशासन अभी से सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या इन दिनों देश दुनिया के राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहाँ हर दिन बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद बताने के लिए काफी है कि भगवान राम को लेकर लोगों में कितनी श्रद्धा और आस्था है। अयोध्या पुलिस प्रशासन ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले राम जन्मोत्सव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस उत्सव को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है औसतन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में कैमरे काउंट के हिसाब से इतने लोग दर्शन कर रहे हैं। आगे भी रामनवमी का जो पर्व आएगा उसमें भी संख्या बहुत अधिक बढ़ के आएगी। जो हम लोगों को शुरुआती आंकलन है उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हुई है और हम लोग का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो उनको सुविधा अधिकतम मिले और साथ साथ सुरक्षा भी हम पूर्ण रूप से मानक के अनुरूप कर सकें। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त रामलला के नवनिर्मित मंदिर को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। राम भक्तों के आगमन और उनके उत्साह से अयोध्या नगरी में एक अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद से रामलला के दीदार करने अयोध्या पहुंची सपना बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। वहीं रायबरेली से अयोध्या आए श्रद्धालु जितेंद्र दुबे अयोध्या में हुए बदलाव को लेकर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए सरकार का आभार प्रकट करते हैं। जाना मंदिर की नींव रही है उसी दिन सामने आके कि हम मंदिर आएंगे। मैं तो शुरू से ही लगा था मंदिर से। हमें जब मंदिर हुई स्थापना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शन करने पे आज मुझे मालूम चल रहा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही अयोध्या विश्व मानचित्र पर एक प्रमुख स्थल के रूप में उभरकर सामने आया है। विश्व के कोने कोने में बसे करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर एक बार रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। आगरा के मनोहर लाल रामलला के दर्शन करने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाले और निर्माण करने वालों को बधाई देते हैं। वहीं मैनपुरी के अनुज भगवान राम के दर्शन करने के बाद खुद को राम भक्त और हिंदू होने पर गर्व करते हुए बेहतरीन व्यवस्था के लिए सरकार को बधाई देते हैं। सबको दर्शन करना चाहिए, बहुत अच्छा इंतजाम है, सबसे बढ़िया इंतजाम करा हुआ। जाओ दर्शन करो राम से, बहुत अच्छा है। अयोध्या राम लला का मंदिर जो बना उसके लिए बधाई योगी सरकार को देना चाहिए। एक टूल भी बढ़ा और इसके साथ साथ हम लोगों का जो भी स्थानीय होने का एक मौका मिला।
सरयू के किनारे बसा अयोध्या इन दिनों श्रद्धालुओं के आगमन से गुलजार है। हर दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहे राम भक्त इस पवित्र नगरी की भव्यता और सुव्यवस्था की कहानी बता रहे हैं। भक्तों के उत्साह के बीच राम जन्मोत्सव पर होने वाले समारोह को लेकर भक्तों में जिस तरह की उत्साह और प्रशासन में चौकसी देखने को मिल रही है, वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या आज किस तरह विश्व पटल पर एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। गर्मी